Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am in chapter number first. Chapter is about fundamental unit of life, the cell. In this chapter today my topic is about to discuss is cell wall and cytoplasm. Cell wall क्या होता है, इसका structure क्या होता है, function it performs to the cell and what is the cytoplasm. तो आज हम इन दोनों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. जो सेल वॉल है, it represents important property to the plant cell that it is only present in the plant cell. Cell wall की हम बात कर लेंगे. Cell wall, it is present in plant cell में होते हैं. And to the plant cell, आपको पता है plant cell are rigid and fixed in shape. It is because of the presence of cell wall. Cell wall in a plant cell give us rigidity and fix its shape. Therefore plant cells are definite in shape. Then the plant cell is जो plant cell में जो cell wall होता है, it is mainly composed of cellulose. ये cellulose का बना हुआ होता है. Cellulose is a complex type of polysaccharides. Complex type of polysaccharides which the cell wall is made up of. And if we talk about the cell wall is composed of primary cell wall. Primary cell wall, the plant cell, it is covered with a primary cell wall, and this primary cell wall is it is associated with a cell in its early age. When a cell grows and develops, when the cell is young, and there is a covering known as the primary cell wall, and this primary cell wall is composed mainly of cellulose and plus pectin like substance, PECT and pectin. ये सेल्यूलोस और पैक्टिन सब्सटेंस का बना हुआ होता है. And this is composed of cellulose, network chain of cellulose. When there is a network chain of cellulose, thousands of number of cellulose, then we can say then primary cell wall is made up of the microfibrils of cellulose plus pectin like material is present in primary cell wall. तो ये इसमें एक तो ये cell wall से बने primary cell wall, and when the cell reaches to the age of maturity, जब यही cell जो है plant cell, it reaches to the age of maturity age में it develops the secondary cell wall. It develops of secondary cell wall when the cell reaches, when cell is in maturity stage. Maturity stage में क्या होता है, ये cell जो होता है, it develops the secondary cell wall, and it is composed of, the secondary cell wall is composed of cellulose plus, and it is composed of the lignin. तो secondary cell wall में हम देखा जाता है when the cell reaches at the maturity stage, when it matures, at that time they develop the extra covering, that is secondary cell wall, and it is composed of a network of cellulose molecules plus additional matter it is in it, that is the lignin. So secondary cell wall is made up of cellulose and lignin. Secondary cell wall.
सेकेंडरी जो प्राइमरी सेल वॉल जो है जो सेल में प्राइमरी सेल वॉल है हम ये कंसिडर कर लेंगे इट इज अ पैलेस्टर। जिस तरह हम पैलेस्टर हमारा ब्रिक वॉल होता है, ब्रिक वॉल पे हम चढ़ाते हैं पैलेस्टर मान लीजिए जो प्राइमरी सेल वॉल है इट इज अ पैलेस्टर एंड देयर सेकेंडरी सेल वॉल इज द पेंट। जो हम पेंट फिर पैलेस्टर पर पेंट चढ़ाते हैं दैट इज द पेंट। तो आपका ब्रिक वॉल जो है, brick wall which separates the two rooms is considered as the middle layer, middle cell wall, middle lamella of the cell. When the cell undergoes the division, जब cell division में हो जाता है, when it goes to the division, cell division, then there is a formation of the layer, separated layer, that is a cell wall, that is known as the middle lamella. Then there is a development of the middle lamellae. Middle lamellae is the composite of, this is the ये cell तब, it is also associated cell wall. ये तब सेल डेवलप करता है मिडल लेमेला। ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के प्राइमरी सेल वॉल के बीचों बीच डेवलप होता है when there is a cell division. When there is cell division they develop a layer which is known as the middle lamella. Middle lamella जो है it is composed of calcium pactate. It is calcium pactate and magnesium, we can say the magnesium pactate. ये इन मटेरियल से बना हुआ होता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला तब डेवलप होता है व्हेन द सेल अंडरगोज अ डिवीजन, और दो सेल्स के बीच में ये डेवलप होता है मिडल लेमिला, दैट इट इज मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और वी कैन से मैग्नीशियम पैक्टेट से बना हुआ होता है, विच सेपरेट्स द टू सेल वॉल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। नाउ इन ए नटशेल सेल वॉल जो होता है सेल का, आई मीन द प्लांट सेल, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस। दे आर द सेल्यूलोस are embedded in a matrix gel-like fluid of the hemicellulose. यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। It is a plant cell. This is a plant cell. It is plant cell, and this plant cell, it is a plant cell. It is made up of the, I can say it is made of cell membrane, and it is a cell membrane. It is a porous, तभी तो मैंने इसमें porous, it is porous, cell membrane. Now this cell membrane is covered by a cell wall. Say it is a cell wall. This is a cell wall. It is here cell wall. It is the primary cell wall. This is primary cell wall. Then there is a development of secondary cell wall. You know that. It is the secondary cell wall. मैंने विकी फॉर्म में बनाया इसको सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद ही डेवलप होता है प्लांट सेल, डेवलप होता है सेकेंडरी सेल वॉल। इफ इट इज द, आई मीन दिस इज द सेल मेम्ब्रेन हियर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस पार्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। To close to the cell membrane, plants develop शाबाश दिस प्राइमरी, मैं लिखूंगा PRY, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। Then it is 2. Then there is a formation of with close with the primary cell wall. When primary cell wall is associated during the early stage of the cell. जब सेल ग्रोथ होती है, सेल की डेवलपमेंट होती है, जब सेल यंग होती है, at that time the cell develops primary cell wall. That is covered by a cell wall that is known as primary cell wall, first cell wall. जब यही cell reaches to the maturity age, older in age, then it develops extra layer. ये मैंने बताया यहाँ पे extra layer, that is known as the
थर्ड सेकेंडरी, SEC सेकेंडरी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा secondary cell wall. In between the after that secondary cell wall, there is a development when the cell divides. When this cell, I say here I will divide this cell here at the center. Say at here this cell divides. याद रखिए at here this cell divides. यहाँ पे ये सेल डिवाइड हो गई. यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने बताया सेल यहाँ डिवाइड हो गई है, तो इसका जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो है ही. अब ये इसका सेल मेम्ब्रेन आ गया. हाँ, आ गया इसका सेल मेम्ब्रेन. शाबाश. ये इसका सेल मेम्ब्रेन. हाँ, इसका अलग उसका अलग डेवलप हुआ. अब ये इसका प्राइमरी वॉल, याद रखिए इसका प्राइमरी वॉल यहां से. अब ये इसका सेकेंडरी वॉल. This is the second. Now there is the formation of two cells, this one and this one. Say अगर ये इससे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, वो चला गया यहाँ पे और यहाँ पे न्यूक्लियस. सेल डिवीजन में क्या होता है? आफ्टर द सेकेंडरी सेल वॉल. यहाँ देखिए यहाँ पे भी है. इस सेल ने भी, मैं यहाँ पे इस डायग्राम को पूरा अप कर लेता हूँ. तो यही सेल यहाँ पे मान लीजिए ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अब यहाँ पे डेवलप हुआ है. सेल डिवाइड हुआ. देखो इसका प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये है. इसने से ये सेल मेम्ब्रेन आया इसका. ये देखिए अब यहाँ से बीचों बीच ये डेवलप कर रहा है. अब यहाँ पे सेल जो प्राइमरी सेल वॉल था यहाँ पे ये, अब इन्होंने अलग सेल वॉल मेम्ब्रेन. इट इज द सेल वॉल. देन देयर इज अ सेकेंडरी सेल वॉल. यस, इट इज द सेकेंडरी सेल वॉल. इन्होंने अपना सेकेंडरी सेल वॉल. Now, in between the two cells, this is the cell first and now it is the cell second. Between the two cells, there is the development of layer, that is the middle lamella. Then this layer which they develop, यहाँ देखिए अब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन. इस सेल का सेल मेम्ब्रेन, ये पेरेंट ओरिजिनल सेल था, ये न्यू सेल है. ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल, देन सेकेंडरी सेल वॉल. हाँ, then there is a formation of between the two cells, there is a formation of जो मैंने रेड कलर, रेड मार्कर से दिखा यहाँ पे. This is the development of middle lamella. Middle lamella develops between the two cells when the cell undergo the cell division. Then this is the middle. This is the middle lamella. Middle lamella. इस तरह they develop the in between the two cells there is the formation of separate cell wall, that is cell middle lamella. And it is all about the cell wall structure, mainly composed of cellulose. बात कर लेंगे हम सेकेंडरी सेल वॉल की. उसमें कंपोजिशन रहता है सेल्यूलोस प्लस लिग्निन. और अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात हम कर लेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोस. Cellulose is the main constituent of the cell wall. सेल वॉल इसी से बना हुआ होता है. प्लांट सेल की बात हम कर लेंगे. It is only present in plant cell. The primary cell wall is made up of cellulose plus pectin like substance. तो यहाँ पे now cell wall जो है, it is totally impermeable. It not allow the material to go from outside, inside, from inside out. Therefore, there is a gap that is known as plasmodesmatar gaps. In the cell wall, there is a plasmodesmatar gaps. Plasmodesmatar gaps. ये देखिए plasmodesmatar gap. These are, this is the cell wall. I talk about primary cell wall, secondary, then there is the middle cell wall. After cell division, हम बात कर लेंगे between the both primary cell wall and secondary cell wall is generally known as cell wall of the cell. After the cell division, there is a formation of the middle layer, that is the middle lamella. In a cell wall, there is a plasmodesmatar gap, so that there is a flow of material from outside to the inside, from inside to the outside of the cell. There is a flow of material
तो ये plasmodesmata gaps, there is a plasmodesmata gap here within the cell wall, there is that gap प्लाज्मोडेस्मेटा, ताकि मटेरियल का आना जाना रहेगा, नहीं तो जो सेल वॉल जो है इट इज डेड, हाँ, it is made of dead cells, and it covers the cell, it gives the protection, mechanical support, and balance the cell interior pressure with respect to the external pressure in the surrounding, वो बैलेंस करता है वो प्रेशर। तो यहाँ पे सेल वॉल जो है इट्स प्राइमरी जॉब इज टू प्रोटेक्ट द सेल by mechanical injuries, provide the mechanical support externally, remains very close to the cell membrane, and cell wall is living component of the cell. I talk about the plant cell, and it gives rigidity and maintain the fixed shape of the cell. Therefore, the plants are usually rigid. They have a rigid hard structure due to the, because though all the cells are covered by a cell wall which gives the rigidity, hardness to the cell, therefore the plant bodies are hard to touch. Here if we talk about the functions of plant cell wall का क्या काम रहता है, then this cell wall, plant cell में peculiarity, also you can say in the cell like the fungi, in the algae, they are also composed of, उनके सेल भी कवर हुआ होता है सेल वॉल से, या बैक्टीरियल सेल की हम बात कर लेंगे, they are also covered with cell wall. That cell wall is somewhat different by the plant cell wall. यहाँ देखिए जो सेल वॉल है इसका क्या functions रहते हैं, in we talk about the functions in plant cell. Plant cell में क्या काम रहता है? Number one, it gives protection, it gives mechanical support, and balance the interior pressure, जो सेल के अंदर प्रेशर हो, interior pressure to the outside, to the exterior pressure जो कि that is exerted by the surrounding. हाँ, नंबर टू जो है इसका मैकेनिकल डिफेंस रहता है, इट प्रोटेक्ट द सेल बाय वेरियस इंजरीज, मैकेनिकल डिफेंस रहता है इसका। थर्ड, it maintains turgor pressure, maintains the turgor pressure, which जब एक्सेस पानी चला जाता है सेल के अंदर तो वहां डेवलप होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस चीज को, that osmotic pressure generates inside of the cell. To balance that pressure, cell wall exerts the external pressure to the osmotic pressure, that is the turgor pressure exerted by the cell wall in order to protect the cell by the bursting out, तो उस चीज को बचाने के लिए। फोर्थ जो इसमें काम रहता है जो सेल वॉल का, तो यहाँ ये चीज है, ऑल्सो द सेल वॉल maintains the, also help in maintenance the fixed shape to the cell. It provides the fixed and definite shape to the cell. Cell अपनी definite, अगर अंदर से कुछ गड़बड़ी भी हो बिल्कुल हमें नॉर्मली दिखता है, cell is in normal in shape and size, it maintains the fixed shape and size. आपने देखा होगा in the phenomenon of plasmolysis में क्या होता है,
जो सेल का कंटेंट जो होता है, सेल का जो कंटेंट होता है प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसकी क्या होती है, दैट अंडरगो द श्रिंकेज, वो श्रिंक होता है, shrinkage. That means at that time the cell content and along with the cell membrane they move away by the cell wall. The concept is known as plasmolysis. In the plasmolysis condition, there is also the cell maintains its definite shape. Externally, it is in proper shape. During the when plasmolysis happens, when we place the cell in the when we place the cell in the hypertonic solution, है ना, hypertonic solution में जब हम सेल को प्लेस कर लेंगे, there is a plasmolysis, जो plasma membrane along with the cell content वो that move away by the cell wall and shrinks to the corner of the cell, उसको कहते हैं plasmolysis. In condition if we place the cell in hypertonic solution, at that time ये सेल वॉल का काम होता है, इंटरनली दे टेक प्लेस चेंज ड्यूरिंग द प्लाज्मोलिसिस, श्रिंकेज ऑफ कंटेंट जो सेल के अंदर कंटेंट था वो श्रिंक हो गया, तो मगर सेल नॉर्मली डिफिनेट इन शेप में रहा. तो ये भी इसमें एक काम है. प्रॉपर प्राइमरी जॉब ऑफ द सेल वॉल इज प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट एंड बैलेंस द इंटीरियर प्रेशर वी जनरेट्स इन द सेल. जब when we place the cell in the hypotonic solution या isotonic solution, उसमें उस वक्त जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर सेल के अंदर चला जाता है, जब there is a excess absorption of water molecules, there is a generation of interior pressure, that is the osmotic pressure due to the excess presence of water molecules. उस प्रेशर और बाहर वाले प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए सेल वॉल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड ये भी इसका है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल डिफेंस, मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड सेल वॉल और पोरस. हाँ, ये भी एक काम है. फिफ्थ वर्क, सेल वॉल जो है इट इज पोरस इन स्ट्रक्चर, इट इज सेल वॉल जो है इट इज पोरस इन स्ट्रक्चर and help us in the flow of Shabbat. Help us in the flow in material. Help us in the flow in material from inside to the outside of the cell. That means it is not completely impermeable. It is a porous in structure and allows the material, nutrients, other soluble, insoluble material to go, other waste products, other synthesizing products material to go outside to inside to outside of the cell. Dear students, it is all about the structure of the cell wall and particularly associated with the plant cell, what its structure is and what functions it performs with the cell. I hope you understand about this topic, cell wall. In the next lecture, my topic will be about the cytoplasm and cell vacuolus, and वो शायद हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर पे. थैंक यू वेरी मच.